वेदर वार्निंग डे 1 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग विथ गस्टी विंड स्पीड reaching up to 30 to 40 kilometers per hour is very likely to occur at isolated places over Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura. Thunderstorm and lightning is very likely to occur at isolated places over Arunachal Pradesh, Nagaland and Manipur. Heavy to very heavy with extremely heavy rain is very likely to occur at isolated places over Meghalaya. Heavy to very heavy rain is very likely to occur at isolated places over Arunachal Pradesh and Assam, and heavy rain is very likely to occur at isolated places over Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura. For day 2, thunderstorm and lightning is very likely to occur at isolated places over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura. Heavy to very heavy rain is very likely to occur at isolated places over Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya. Heavy rain is very likely to occur at isolated places over Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura. For day 3, we are expecting that thunderstorm and lightning is very likely to occur at isolated places over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura. Heavy to very heavy rain is very likely to occur at isolated places over Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya. For day 4, we are expecting thunderstorm and lightning is very likely to occur at isolated places over Assam and Meghalaya, and heavy to very heavy rain is very likely to occur at isolated places over Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya. For day 5, we are expecting thunderstorm and lightning is very likely to occur at isolated places over Assam and Meghalaya, and heavy rain is very likely to occur at isolated places over Arunachal Pradesh, असम एंड मेघालय। डे 1 और डे 2 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की अति संभावना है। डे 3 की बात करें तो डे 3 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की अति संभावना है। साथ ही साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की अति संभावना है। डे 4 और डे 5 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की अति संभावना है। वेदर वार्निंग डे 1 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग विथ गस्टी विंड स्पीड reaching up to 30 to 40 kilometers per hour is very likely to occur at isolated places over Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura. Thunderstorm and lightning is very likely to occur at isolated places over Arunachal Pradesh, Nagaland and Manipur. Heavy to very heavy with extremely heavy rain is very likely to occur at isolated places over Meghalaya. Heavy to very heavy rain is very likely to occur at isolated places over Arunachal Pradesh and Assam, and heavy rain is very likely to occur at isolated places over Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura. For day 2, thunderstorm and lightning is very likely to occur at isolated places over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura. Heavy to very heavy rain is very likely to occur at isolated places over Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya. Heavy rain is very likely to occur at isolated places over Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura. For day 3, we are expecting that thunderstorm and lightning is very likely to occur at isolated places over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura. Heavy to very heavy rain is very likely to occur at isolated places over Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya. For day 4, we are expecting thunderstorm and lightning is very likely to occur at isolated places over Assam and Meghalaya, and heavy to very heavy rain is very likely to occur at isolated places over Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya. For day 5, we are expecting thunderstorm and lightning is very likely to occur at isolated places over Assam and Meghalaya, and heavy rain is very likely to occur at isolated places over Arunachal Pradesh, असम एंड मेघालय। डे 1 और डे 2 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की अति संभावना है। डे 3 की बात करें तो डे 3 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की अति संभावना है।
साथ ही साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की अति संभावना है। डे 4 और डे 5 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की अति संभावना है।